Om. 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। So we are looking at the signs or the lakshanas of the man of wisdom. And till yesterday we saw, which verse we saw? यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. He who remains unattached under all conditions, he who is neither delighted at good nor dejected with evil is stable in wisdom. And yesterday we told in detail about what this verse is trying to teach us, or what Bhagwan is trying to tell Arjun. Now continuing, now another question of Arjuna, which was, how does a person with a balanced mind, how does he sit, how does he move around, etc., etc. To that question he is answering. You can repeat after me. Yada samharate chayam, yada samharate chayam, kurmongani vasarvashaha, kurmongani vasarvashaha, indriyani indriyarthebhyah, indriyani indriyarthebhyah, tasya prajna pratisthita, tasya prajna pratisthita. When, like a tortoise, withdrawing its limbs from all sides, he detaches completely his senses from sense objects, his wisdom is stable. Dekho. So have you ever seen a tortoise when it is in danger? What does it do? It immediately, 5 things go in. The 4 legs and the head, all of them go under the shell, and nobody is able to do anything to it, because there is a shell on the top, there is a shell at the bottom, and he withdraws between the 2 shells. Even a cheetah, lion, they can't eat it because they can't enter between the 2 shells. And this is how he protects himself from the world around, which is ready to devour. Same thing. The world which we are living in is ready to devour us. Time is devouring us. Space is devouring us. Objects are continuously attracting. आजा मुझे ले ले, आजा मुझे ले ले. हम पागलों की तरह उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं और फंस जाते हैं. उसके बाद फिर पता चलता है, अरे यार पूरी जिंदगी निकल गई, सिर्फ शॉपिंग ही करते रहे, बाकी भी कुछ कर लेते तो अच्छा था. तो आप लोग तो माया नगरी में रहते हो, तो अपने आप को बचा के रखो थोड़ा. तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कैसे बचाना है. इट्स ओके ना इफ आई स्पीक इन हिंदी इन बिटवीन? जो नए आए हैं, इट्स ओके. बिकॉज देयर इज वन पर्सन हु डजंट स्पीक इन इंग्लिश, सो देयरफॉर, and he doesn't speak Hindi, so I have to handle both. So in this way, Bhagwan is telling that just like our Mahatma Gandhi said, Bura mat bolo, Bura mat dekho, Bura mat suno. But that covers only 3. Who will say Bura mat sungo, Bura mat taste karo?
तो वो भी तो है आगे, और फिर बुरा मत फील करो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? अब स्किन तो बाहर है, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि आंखें अगर बाहर देख रही हैं, हाउ डू यू विड्रॉ योर आईज? यू नो, आईज I'll tell you one thing. You think that objects of the world, जो पदार्थ हैं जगत के, ये आपकी आंखों को त्रास देते हैं? नहीं देते। शब्द आपके कान को त्रास देते हैं? नहीं देते, दे ही नहीं सकते। No, none of the stimuli can affect or disturb any of the five senses. Is that your experience? I'm going to change it right now. Is that your experience that they get disturbed? Yes. हाँ? कोई ज्यादा बोलता है तो कान दर्द होते हैं। कुछ ज्यादा, इफ लाइट इज टू ब्राइट, आंखें दर्द होती हैं। अगर लाइट है ही नहीं तो डर लग, आंखों को कुछ दिखता नहीं। इसी तरह से हर हर इंद्रियों के लिए जो भी स्टिमुलाई है, उससे उसको कुछ ना, हमको लगता है कि कुछ फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा पहले। कैसे? what are the physical eyes able to see, or through the physical eyes the life is expressing as vision? Correct? Vision is a principle. इंग्लिश में मेरे को नहीं पता, क्या हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। विजन इज अ प्रिंसिपल. You are also having vision, I am also having vision, he is also having vision, everyone has a vision. Correct? Vision is illuminating every object that comes in front of it. Correct? Just like sun is illuminating, the moment it comes up, it illuminates the whole world. Is the sun affected by what it is illuminating? We're going logically here. Is it getting affected? No. When your vision, for this moment, it is illuminating, the laptop came in front, so it is illuminating. In the laptop, the shlokas came, it is illuminating that. Then it shifted to this flame, then it is illuminating that. Then it shifted to the camera, it is illuminating that. And the objects keep changing, keep changing. But does the vision keep changing? Attentively, huh? Does the vision keep changing? Does the vision get affected by what it is illuminating? It's a continuous source of light, vision. It's a continuous vision. And any object that comes in front of it, उसको वो illuminate करती है, उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट आता है, उसको illuminate करती है. तो vision is not getting affected. Now, this is one example I have taken for you. Same thing is happening with your ears. The ability to hear is not disturbed by any sounds or no sound. Correct? They come. If it is there, it's good. If it is not there, ability of to hear is still there. Same way with smell. That ability of smelling is common for everyone, and it is there. If the smell comes, it illuminates that. When it goes away, it continues to be there, only waiting for the next object to come to whatever the smell is. Same way with the tongue. तीखा है, मीठा है, कड़वा है. So the tongue doesn't become, ये मेरी, I will not go out and taste it. ऐसे तो tongue कभी बोलती नहीं. The tongue, the taste also is common denominator, and it keeps illuminating all the tastes as they come and go away. So, in other words, by giving these few examples, every sense has a potential within it, as vision, as smell, as hearing, as tasting, as smelling, as and each one is undisturbed. This is very important point. Is undisturbed by what it is illuminating. Correct? This you may not have ever thought in your life. You are thinking, I don't want to see this. This is very ugly. और दिस इज वेरी, बच्चों को बोलते हैं ना, जब हम भूतों की मूवीज देखते थे तो शॉल लगा के देखते थे छोटी सी फट से.
तो अभी तो अब ये अंडरस्टैंडिंग है, तो पता चला कि भाई हमारी आंखें तो कभी डिस्टर्ब ही नहीं होती, दे आर जस्ट द इल्यूमिनेटर्स। अब जितनी भी स्टिमुलाइज पांचों सेंसेस से अंदर आ रही हैं, the color and form stimuli, the sound stimuli, the smell stimuli, the taste stimuli, the feeling stimuli, where do they go? Mind, correct? Not brain, mind. Brain is only a physical machinery through which the mind functions, but it does not only function from the brain. It functions. Mind is not located only in this body. It is infinite. So when you decide that I am only this body, then what can mind do? It starts behaving only as this body. And that's why all the complications in life. Bhagwan's mind is, what is it doing? He says, everything I am. So no complications in life. He's the master. So anyway, so now all the stimuli are going into the mind. हम कहते हैं मेरा my mind is disturbed, my mind is depressed, my mind is excited, my mind is ambitious, my mind is blah 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 blah. Now tell me, in the mind are the thoughts coming and going, all types of thoughts, isn't it? Has mind ever gone away from there? It's always there. It gives all the thought stimuli which are appearing as thoughts, it is giving the platform. Come, express yourself and go away. Correct? Continuously. So mind is also not affected by thoughts. If it was affected by thoughts, it would have stopped thinking long ago. But it doesn't stop thinking. It continues, allows thinking to happen on the platform of on its platform. So neither the senses are affected, nor the mind is affected. At the intellect level, something expresses. What is that? I. Does I get affected? Because for every thought to happen, I have to be there. If I am not there, thought cannot happen, isn't it? I see, I hear, I touch, I feel, I think, I imagine, I think of the past, I think of the future, I am inspired, I am depressed. Everything is I. So my question to you all is, does I get affected? Be ready to change your take on all this. I also does not get affected. You may feel, because your idea of I is different to what I'm telling you right now. Just analyze a little bit. For every thought to happen, for every thought to appear on your mind, I'm just a little bit technical and then we'll go ahead. For every thought to appear in your mind, 3 ingredients are required. 3 ingredients. What is that? Tell me. Huh? Stimulus. Stimulus to aa gaya na bahar se. Name and form is just vision. What are the 3 ingredients? I'll tell you. For every thought to take place in your mind, first ingredient is subject. The I has to be there. A dead man cannot have thoughts. Only a living person can have thoughts. So first is the subject. Subject cannot appear by himself. He needs to relate with an object. So there has to be an object. Correct? Subject and object. Subject is there is coexisting with object. But subject cannot see the object or experience the object without instrument of knowledge. So if the object is, as he said, name, color and form, then I, the subject, color and form, the object, and instrument of knowledge for color and form is what? Eyes. For smell, I, the subject, smell the object. The instrument of knowledge is nose. I, the subject, some thought, imagination, the object.
The instrument of knowledge is the mind. Understand? And with every thought, one subject comes, one object comes, equation is complete with the instrument of knowledge, and that equation dies. Subject also goes away, object also goes away, instrument of knowledge also goes away. Then next thought comes. So sometimes I'm seeing, sometimes I'm talking, sometimes I'm hearing, sometimes I'm feeling. So every time the I is coming up, I is going away, I is coming up with reference to the object. Then if I is also not affected, then who the bloody hell is affected? Eyes are not affected. I'll tell you, I'll take you outside also. In the outside world, space is not affected by everything that it is accommodating. We saw all the faculties are not affected by the stimuli. We saw the mind is not affected by the thoughts. You understood that much. Don't just say yes because I'm saying so. You are understanding. Then fourth part, the eye is also not affected with any object because it goes away with every object. Then who is the fellow or felly or fella who is affected? Who is squirming? I don't want this. I didn't know why I made the coffee, but Swamiji did not drink it. Who is this fellow? Understand what is ego. I'm going to tell you now what is ego. That is the best way the Shastras explain. Imagine there is a फूलझड़ी, जानते हो फूलझड़ी? You have दिवाली में यहाँ पे यूज करते हो ना, फायर क्रैकर, उसको घुमाते हैं. इट्स वन फायर क्रैकर, एक फूलझड़ी है. उसको आप धीरे धीरे घुमाओगे तो आपको सर्कल नहीं दिखाई देगा. ठीक है? जब आप तेजी से घुमाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक सर्कल जो है नहीं पर दिख रहा है. और उस सर्कल में बेशक आपको सर्कल दिख रहा है, पर आपको इतना पता है कि वो फूलझड़ी कहीं पे भी एक समय में एक ही जगह पे रह सकती है. इट इज नॉट कंटिन्यूअस. फिर भी आपको सर्कल दिख रहा है. इसी तरीके से अपना ईगो है. हर क्षण सिर्फ एक बार आए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का एक थॉट बनता है, पर ये सब थॉट्स इतनी फास्ट जा रहे हैं कि हमको लगता है कंटिन्यूटी है. और उस कंटिन्यूटी आई की कंटिन्यूटी को हम ईगो बोलते हैं. मतलब कौन है ईगो? जो दिखती है पर है नहीं. कैसे? हमको औरत दिखती है पर हम उसको बीवी समझते हैं. है तो औरत. हम अपने आप, हम आदमी हैं पर अपने आप को बाप समझते हैं, बेटा समझते हैं, पति समझते हैं, भाई समझते हैं. और ये सब क्या है? ये वहां पर दे आर नॉट रियल. दे अपीयर टू बी देयर बट एक्चुअली आर नॉट देयर. हु इज देयर? मैन. हु इज देयर? वुमन. हु इज देयर? सब्जेक्ट. हु इज देयर? ऑब्जेक्ट. बट कंटिन्यूटी इज नॉट देयर. So what are you living in today? You are living that yesterday also I was, today also I am, tomorrow also I will be. So what do you mean to say that I was not there yesterday and I will not be there tomorrow? Yes, not as the body, not as the thought, not as the feeling, not as the senses, not as the idea that you have about yourself. All that is imaginary. सत्ता स्वरूप तुम हो. Anyway, थोड़ा सा आपके लिए चारा. या तो आप पागल हो जाओगे या आप रियलाइज्ड हो जाओगे. यहाँ पे बता रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? मैन ऑफ स्टडी विजडम. तो हम उसके लक्षण बता रहे हैं. तो जो द मैन ऑफ स्टडी विजडम, ही डज नॉट गेट कॉट अप इन ऑल दिस. तो यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक व्हेन ही इज मूविंग अराउंड इन द वर्ल्ड, ही is ever withdrawn from his senses. It's not that he's closing his eyes, he's closing his ears. No, he एक प्रत्याहार करके आपने नाम सुना होगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार. तो प्रत्याहार is this stage where your eyes and senses are still open, but the mind is not ready to move out of the senses. जैसे जब हमारा एग्जाम आ रहा होता है ईयर 10 का या 11 का, 12 का,
बोर्ड का, नॉर्मली वी विल प्ले, हमको मूवी देखना है, हमको सीरियल्स अपने देखने हैं, अपने सब प्रोग्राम्स देखने हैं, पर एग्जाम आ गया तो क्या हो जाता है, मम्मी खाने पे भी बुलाती है तो हमको सुनाई नहीं देता कि मम्मी ने खाने पे बुलाया, नहीं तो हम 10 बार उनको तंग करते रहते हैं, आई वांट फूड, आई वांट फूड, आई वांट फूड। वहां पे मम्मी कहती है कि सीरियल इतनी कितना पढ़ाई कर रहा है मेरा बच्चा, पर पागल हो जाएगा, मेरे को पागल बच्चा नहीं चाहिए, थोड़ा टीवी देख ले यार। पहले तो बोलती थी कि टीवी मत देख, अब एग्जाम आ गया तो कह रही टीवी देख, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट एंड गेट टू सम, टू गिव हिम, टू गिव माइंड एन ऑल्टरनेटिव। नहीं तो उस टोटल फोकस में कई लोग तो पागल भी हो जाते हैं। पर तुमको वो भी सुनाई नहीं देता, किचन में से मम्मी चिल्ला रही है खाना खा ले, सैंडविच बना दिया, डोसे बना दिए, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बच्चा इतना मग्न हो चुका है अपनी पढ़ाई में कि उसको बाहर का कुछ, उसको ये नजरअंदाज कर दिया उसने, बिकॉज नजरअंदाज करना मतलब क्या, ही हैज स्टॉप्ड गिविंग वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Man of wisdom functions like this, like that tortoise. He has stopped giving importance to the world. Therefore, even while he is in the world, he is not of the world. He is not affected by the world. He is not enslaved by the world. He does not react to the world. Why? He has given zero value to the world. Move around like this, फिर देखो मजा जीने का। हमारी क्रिएटिविटी पता है कहाँ पे खत्म हो जाती है? हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है बिकॉज वी अलाउ सो मेनी ऑप्शंस। Our senses are continuously bringing the stimuli. Our mind is continuously imagining option after option after option after option. And when there are too many options, there is no creativity. It sucks away your energy. Lesser the options, more is the freer is the mind. A free mind is a source of creativity. And that creativity is not planned and imagined. No, it is spontaneous. It is spontaneous. अभी मैंने तुमको नुस्खा बता दिया, अब उसके ऊपर वर्क करो। Whether it is in business, whether it is in family, whether it is in देवा देवी, सब जगह अप्लाई हो जाता है। हाँ, so in this way, the tortoise withdrawing its limbs from all sides, he detaches completely from his senses. यहाँ पे लिखा है कि he detaches. मैंने आपको अभी क्या बताया? Detachment is not possible because you were never attached in the first place. Is the space in this room attached to the walls? Not attached. आसक्ति है ही नहीं उसमें, क्योंकि the moment walls are broken, the space becomes one with the total space. And even if the walls are not broken, we don't have the eyes, but every particle of this wall is pervaded by 99.9999% space, isn't it? According to science. But you are seeing solidity, but actually it is 99.9% emptiness. तो जरा सोचो, in this manner, the wise man, he has this type of attitude, and with that attitude, he is ever withdrawn, not having any interest in this world. But you see, Shirdi Sai Baba or Satya Sai Baba or Raman Maharishi, they will make any Mahatmas you will see, they will, even our Swami ji, उनको तुम नागपुर ले जाओ, वैसे कभी गार्लिक वार्लिक कभी नहीं खाएंगे, तीखा नहीं खाएंगे, पर यू टेक हिम टू शेगांव एंड नागपुर, हाँ मेरे को झुनका भाकर चाहिए और मेरे को ठेचा चाहिए और वो भी लहसुन का, खाते हैं दबा के मिर्ची के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि he has got attached to it. They do it to please the host.
Anyway, continuing again, Lord Krishna explains in the next verse that mere withdrawal of senses from sense object is not the mark of a man of steady wisdom. क्योंकि दिस इज ओनली प्रत्याहार. आफ्टर प्रत्याहार में क्या हो जाता है? यू हैव विड्रॉन योर सेंसेस, बट इफ यू डोंट गिव योर माइंड अ हायर गोल टू परस्यू, दैट mind which was in a limbo, which was not going out of the senses into the world, but doesn't know where else to go, it's just hanging there. Then the next stimuli that comes from outside or from subconscious, it will hijack that mind, and before you know, suddenly whole life is over or many years are over. See, here the verse says, Vishaya vinivartante, Vishaya vinivartante, Niraharasya dehinaha, Niraharasya dehinaha, Rasavarjam rasopyasya, Rasavarjam rasopyasya, Param drishtva nivartate, Drishtva nivartate. Sense objects cease to exist for him who does not enjoy them with his senses. Rasa varjam. हमारे हमारे हमारा मन बार बार इंद्रियों से बाहर ऑब्जेक्ट्स में क्यों जाता है? क्योंकि मैंने पहले बोला था ना, वी गिव वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस टू द ऑब्जेक्ट्स. इसको बोलते हैं, उसमें रस ढूंढता है. कितना सुंदर रेनबो था, ये कितनी सुंदर है, पहली बार देखा कितनी सुंदर लड़की है. हाँ, फिर दूसरा थॉट, अरे यार हाँ, इसके साथ शादी की तो बच्चे अच्छे होंगे, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी पूरी अच्छी जाएगी. हर एक कोई ऐसे ही सोचता है, लड़की भी सोचती है, लड़का भी सोचता है. क्यों? उसने क्या देखा उसमें? उसको रस आ गया कि इसके साथ जीने में, गुलाब जामुन खाने में, इस घर को खरीदने में, इस जगह इन्वेस्ट करने में उसको रस मिलता है. अंदर कुछ होता है, कुछ कुछ होता है? और वो जो है रस, वो जो वो जो रस है, दैट देन बिकम्स योर व्हाट यू कॉल डिफॉल्ट सेटिंग. और उस डिफॉल्ट सेटिंग पे हम चल रहे हैं. हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा गीता की क्लासेस कर लेते हैं, थोड़ी किताबें या यूट्यूब पर सुन लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमको थोड़ा आ गया. लेकिन जब तक वो रस नहीं जाएगा, तब तक दुनिया आपको छोड़ने नहीं वाली. ये आपको अपने अंदर वर्कआउट करना है कि मुझे उसको वैल्यू और इंपॉर्टेंस देना बंद करना है. फिर किसको देना है? कल हमने बताया था किसको? मैन ऑफ स्टडी गिव्स विजडम गिव्स अटेंशन टू हुम? टू द आत्मा और टू द लॉर्ड इन हिज हार्ट. अभी आज कार में आते समय इन्होंने कहा कि उनका बहुत प्रिय श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अनन्यास चिंतयन्तो माम, यहाँ पे नहीं है वो मंत्र श्लोक, पर प्रभु को या आत्मा को चिंतन कैसे करना है? अनन्या. अनन्या मतलब एक्सक्लूसिव, विदाउट एनी करप्शन. यू थिंक ऑफ द लॉर्ड, उनका नाम लो, उनके आकार को देखो या आत्मचिंतन करो. तो भगवान कह रहे हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, को जो भी मुझे एक्सक्लूसिवली याद करेगा, नित्य उपासते, कंटिन्यू. उपासना मतलब आपको पता है, उपासना कि कंटिन्यूअस विदाउट अ ब्रेक उनको याद करते रहो. और जरूरी नहीं कि चिल्ला चिल्ला के मन में, कभी चिल्लाओ, कभी मन में बोलो, कभी बस उनकी छवि अपने आंखों के सामने रखो. जिनको पिक्चर देखने की आदत है तो उनकी छवि रखो, जिनको सुनने की आदत है वो उनका नाम रखो, जिनको जिनको ये धारणा है कि प्रभु हमारे अंदर से ही प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आप अपने आत्मचिंतन करो कि किसी भी तरीके से सम हाउ यू कनेक्ट टू हिम. अनन्याश्चिंतो माम ये जना पर्युपासते, जो लोग ऐसे उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्त, और कंटिन्यूअसली. और भगवान फिर कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि भगवान उनको एश्योरेंस दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं?
कि जो उसको योग, योग मतलब जो उसके पास नहीं है और जो उसकी इच्छा है। इच्छा मतलब ये नहीं कि मेरी इच्छा मेरे को शादी करनी है लड़की, अगर ज्यादा जब करोगे तो वो भी हो जाएगा। पर यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी योग, योग मतलब यूनियन, इजंट इट। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी ने कहा कि स्वामी जी मैं बचपन से मैं मंत्र कर रही हूँ, मेरे को तो भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया उनको, याद है कल? उन्होंने कहा, तुम्हारे तुम बचपन में कैसी थी, गरीब, अब कैसी हो, अमीर। तुम्हारा पति कैसा है, बहुत अच्छा है। बच्चे कैसे हैं, एकदम सभ्य, सांस्कृतिक, संस्कारी। तो नौकरी, नौकरी स्वामी जी पहले नौकरी की थी, अब तो बिजनेस है, मिलियंस में है। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और क्या, नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो स्वामी जी ने कहा, उस महात्मा ने कहा कि सारा जब तू बचपन से जो कर रही थी, तू नित्य निरंतर उस जप को कर रही है, लेकिन उस जप से जो भी पुण्य अर्जित हो रहा है, वो सब तो तूने ऑलरेडी खर्च कर दिया। अच्छा पति मिल गया, अच्छे बच्चे मिल गए, बिजनेस हो गया, नौकरी अच्छी हो गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो अभी तो तू जीरो पे है, भगवान को बुलाना है तो तेरे को ये सब, क्योंकि जब जब करना शुरू करते हैं, कभी कोशिश करो, जब करना शुरू करोगे, जैसे जैसे मन एकाग्र होने लगता है जप के ऊपर, मंत्र के ऊपर, उस समय अंदर से इच्छाएं जो अधूरी पड़ी हैं वो आनी शुरू होती हैं। काश ऐसे हो जाता, ओम श्री कृष्णा शरणम मम, काश ऐसे हो जाता, ओम श्री कृष्णा शरणम मम, कटाक से वही हो जाता है। जब तक यह तब तक होता रहेगा जिस दिन आपको पता चलेगा कि अंदर से कोई गलत इच्छा भी ऊपर प्रकट हो गई और वो भी ठीक, वो भी फलीभूत हो गई। फिर लगता है यार ये तो गड़बड़ है। अच्छा तो जब तक अच्छा चल रहा था तब तक ठीक है, अब बुरा भी होने लग गया, पर मैंने तो मांगा नहीं, पर आया तो तुम्हारे अंदर से ही ना। फिर हम ना अच्छा चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, फिर हम सिर्फ भगवान को चाहते हैं। पर ये अनुभव करना पड़ता है थोड़ा सा, एक दो बार अनुभव होगा, जरूरी नहीं कि कोई बड़ा अनुभव, एकदम लाइफ चेंजिंग अनुभव हो, किसी किसी को हो भी जाता है। बट इफ इट इज ब्रिंगिंग दैट पर्सन बैक टू द लॉर्ड, एवरीथिंग इज फेयर इन इन लाइफ। हाँ, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि sense objects cease to exist for him who does not enjoy them with his senses, but the taste for them may persist. वो रस जो है ना, it may persist। इसीलिए देखो, हम रात को सोने जाते हैं, अगर मैं रात को सोने के लिए जाऊं कि मेरे को यार आज मेरे को रात को हल्दी वाला दूध पीना था, और कौन उठेगा बिस्तर में से, मम्मी ने भी नहीं बना के दिया, बीवी ने भी नहीं बना के दिया, पति ने भी नहीं बना के दिया, पर काश गरम गरम दूध मिल जाता, और जो है ना, और टंग सो गए। अब क्या हो गया, मन तो खाली हो गया, सो गए, मन में तो कोई इच्छा ही रही नहीं। पर जब सुबह उठोगे तो क्या होगा, बताओ? पहला विचार आपके मन में उठते ही हल्दी वाला दूध। क्यों? क्योंकि उसका रस अभी मन में बाकी था। तो इस तरीके से अपने जीवन में हमने बचपन से लेके अभी तक कितने रस पाल के रखे हैं, कितनी अधूरी इच्छाएं हैं। ट्राई टू वर्क इट आउट बाय डूइंग जपा, rather than try to fulfill all the desires, because you fulfill one, 100 more will be ready। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि दिस रिलिश ऑल्सो, ये जो रस, गिविंग वैल्यू, इम्पोर्टेंस, उसके प्रति आसक्ति जो है, किसी भी विषय के प्रति, ये जो महात्मा है वो इसको भी छोड़ देता है, उसको किसी चीज में रस नहीं है, सिर्फ एक चीज में है, किसमें? प्रभु में या आत्मा में। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, है एक ही चीज, अलग अलग। योग में परमात्मा है, भक्ति में भगवान है, ईश्वर है, और वेदांत में ब्रह्मन है, पर तीनों चीजें एक ही है। और वही तीनों, उनके लिए एक और नाम है। स्क्रिप्चर्स भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमको सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग चाहिए।
तो क्या बोलते हैं, अच्छा वही चीज, वही परमात्मा, वही भगवान, वही ब्रह्मन तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में प्रस्तुत है। लगे रहो। हाँ, तो यहाँ पे बोलते हैं कि when he realizes the supreme means, जब वो प्रभु के प्रति या आत्मा के प्रति निष्ठुर हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है, तो और वही एक तोड़ है। यू कैनॉट लीव द वर्ल्ड परमानेंटली, वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, because from childhood we have trained ourselves in a different way. The society has trained us, the parents have trained us, we have trained ourselves, our education system has trained us to be objective. Success means this, success means that, achieving this, achieving that, traveling here, traveling there, that is success for us. But nobody has ever taught us contentment is success. फर्स्ट वर्स में आया था ना, संतुष्ट वर्ड कल हमने लिया था। कंटेंटमेंट इज सक्सेस, शांति जो कभी आती या जाती नहीं, दैट इज सक्सेस। एंड फॉर दैट यू डोंट, if everything is there or not there, it does not matter. In this manner, we come to the next verse. It says, अगर ये जो रस है विषयों में, अगर ये जाता नहीं, व्हाट इज द हार्म इन इट देन? तो यहाँ पे बताते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि, इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, हरन्ति प्रसभं मनः। The turbulent senses, O son of Kunti, forcibly sway the mind of even a wise man who practiced self-control. मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ. Before I went to the ashram, I was doing a lot of Kundalini Abhyas and different types of exercises, and ध्यान लग जाता था. कभी कभी तो 4-4, 5-5 घंटे रात का मैं सोता नहीं था, ध्यान में बैठा रहता था, खाली मन. जिस दिन मेरे को 1-2 दिन ऐसे हो गया, मैं सोचता था यार आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड देन ऐसे चलो अब तो, बिकॉज देयर वाज नो डाउट इनसाइड दैट आई हैव नॉट, आई डोंट नो माई सेल्फ, आई नो इट, एंड आई यूज्ड टू, and once that went into my head that I have achieved, because I didn't know anything better at that moment, and then all the practices became less and less and less, and then I started drinking, I started smoking, I started gambling, because उनमें रस था पहले. ऐसे कुछ किया नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्या भी होगा अभी याद नहीं मेरे को. तो उसमें ज्यादा था, एंड दिस पैटर्न वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 9-10 months. एवरी मंथ आई विल डू लिटिल बिट प्रैक्टिस, क्योंकि the ability to withdraw from everything, I had mastered it, and I used to overcome it and go into the silence, niruddha bhumi. और पर उसके बाद जब मैं छोड़ देता था, फिर मैं कभी नहीं, खुद कभी नहीं जाऊंगा, कहेगा चल यार बियर ले ले, तू इतने दिनों से नहीं ले. नहीं नहीं, मैं साधना करता हूँ, मैं बियर नहीं पीता. 1 दिन बोलूंगा, 2 दिन बोलूंगा, तीसरे दिन आई विल स्लिप, बिकॉज रस है, interest is there. The value of the beer, that it cools me down, that it is spiritual in nature, has not gone out of my mind yet. See? And this went on for 8-9 months, month after month. I'm doing my sadhana, I'm coming into silence. After 10-15 days, the sadhana used to be left. I used to get back into the wrong habits, which were still, probably they were lurking. That's why they are coming out of me. They're taking me in that direction, because they still had some value for me. See? And one day I sat down.
Totally. Suddenly it clicked after 8-9 months. Ki yaar, I am into this bloody pattern. I need to get out of this pattern. What is this going on? Every time I sit in meditation, I think I'm there, and then I'm doing all these unwanted things, and it is happening. How come I didn't catch it the first time? It took me 8-9 months of my life has gone. And in those days, I didn't know scriptures that time, only sadhana. I took my pen and paper and I started self-analyzing. Where am I going wrong? टक 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 टक. लिखता था, बहुत लिखता था. कुछ आंसर ही नहीं आया. And I was frustrated. 3 days I was frustrated. My sister came. We discussed. She couldn't answer. I didn't have any answers. And I am writing, ki, where am I going wrong in this whole thing? Why is this pattern repeating itself? Is my sadhana not enough to purify me and take me out of all this? Why these old patterns are still exhibiting themselves? And मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और बिस्तर में लेटा हूं. उन 2-3 दिन में रोज रात को रोता था. Imagine 30-year-old fellow is crying in the bed. Nothing wrong if it is for Lord. So I was crying and I just didn't know where the answer will come from, where not. And suddenly someone had given me a Bhagavad book, श्रीमद् भागवतम का नॉवेल करके टाइप था, और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की फोटोग्राफ थी. मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, लाइट्स ऑफ हैं, रात के 1-1:30 बज गया है. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं. कभी मैं उठ के लिखता हूँ टेबल पे जाके, फिर वापस आके ले जाता हूँ, फिर रोना आ रहा है कि भाई आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को भगवान ने छोड़ क्यों दिया, मेरे को आंसर क्यों नहीं मिल रहा है. एवरीथिंग आई हैव वर्कड आउट इन माय लाइफ, but why this is not getting worked out? And suddenly my hand went to the side table. I picked up the book. In the street light from the window, the light came and fell on Shri Krishna on the book cover. मैं पिक्चर को देखा, भगवान मेरे को ऐसे क्यों रास्ते में छोड़ रहे हो, कुछ बताओ यार, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी. एंड मैं उसको देखते 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 आई ट्राई टू ओपन द बुक. इट वॉज वेरी वेरी स्मॉल लेटर्स, आई कुडंट इवन रीड. तो मैंने फिर बंद किया. मेरे को फोटो ही देखते हैं यार, और क्या करना है. तो फोटो देखता रहा, और देखते देखते कब आंखें बंद हो गई मुझे पता नहीं. एंड आई एम नॉट लाइंग डाउन इन बेड, आई एम जस्ट हाफ अप. एंड सडनली आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ आकाशवाणी. अंदर से एकदम से उस नींद में से मेरे को ऐसे झटके में उठाया. भगवान कहते हैं, भगवान की आवाज, क्या अभी तक तूने सारी साधना की, पर तूने कभी साधना मेरे लिए की? अरे बाप रे, कभी किसी ने मेरे को बताया ही नहीं था कि भगवान के लिए करनी चाहिए, क्योंकि कोई गुरु था नहीं, सब अपने आप एक्सपेरिमेंट चल रहा था. हाँ ये तो है, मैंने तो भगवान के लिए, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी को जागृत कर रहा हूँ, मैं क्रिया योग कर रहा हूँ, मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ. मैंने कभी भगवान के लिए, भगवान को अर्पित ही नहीं किया कुछ. ओ ऐसा सब, everything as if someone has squeezed me. I started crying. And there and then I told him, wherever the sound had come from, I told him, okay, from now only, I'll start taking your name. If you say that I have not taken your name, I will take it now, but for 6 months. मैंने कहा 6 महीने में अगर मेरा बेड़ा पार नहीं किया तो मैं तेरा नाम कभी नहीं लूंगा. And I did not sleep. Day in, day out, driving, walking, working, I am taking Bhagwan ka naam. 6 months later, before 6 months were over, मुझे को पता नहीं था कि मैं सन्यासी बनूंगा, मुझे नहीं पता था कि मैं आश्रम जाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि मेरे को गुरु मिलेंगे, हमारे अनुभवानंद जी हमको मिलेंगे, कुछ पता नहीं था. But before 6 months were over, the ultimatum that I had given him, I was in the ashram. देखो, कमिटमेंट चाहिए. तो यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे हैं कि जो मैं किस लिए ये पूरी स्टोरी बताई आपको अपने माध्यम से, कि जब तक हमारे जीवन में किसी चीज के प्रति रस है,
एक और मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ. I used to stay in Melbourne, and one of my friends, he just got married. He migrated to Melbourne. मैंने कहा तू मेरे पास आके रह ले, मेरे पास फ्लैट था. So they used to live there, and she was pregnant, and I used to go come back from work. I had a cigarette packet in my bedroom. I had a cigarette packet in my drawing room. I had a cigarette packet in my locker. I had a cigarette packet in my pocket, so that whenever I want, it should be available wherever I want. And one day I came back and I left my cigarette packet in the locker at work. And I came home and I didn't feel bad. I got a cigarette packet at home. So I came back and I couldn't find it anywhere. And she was making some Chinese for us, me and her husband. And husband had gone to work. So I asked, have you seen my packet? She just, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के सामने स्माइल कर रहे थे, तो शी स्टार्टेड स्माइलिंग. और जितना वो स्माइल करे और फिर खिकी खिकी करके, यंग लड़की थी, 21-22 की थी, और खिकी खिकी करके मेरा गुस्सा और बढ़ता जाए क्योंकि सिगरेट नहीं मिल रही, तड़प लगी हुई है. गुस्से में मैंने दरवाजा बंद किया, गया नीचे 7-Eleven से जाके 3 पैकेट सिगरेट के खरीद के लेके और वापिस आया. और फिर मैंने को बोला, देख तू क्या सोचती है, मेरा सिगरेट पैकेट छुपाएगी? मैं 3 खरीद के लेके आऊं, अब मैं और पीऊंगा सिगरेट. And suddenly, while talking to her in the kitchen, my attention went from the corner. I saw the cigarette packet where I had kept it. In that one moment, my cigarette smoking stopped, never to come back again. The thinking was, why am I making this young girl go through all this drama because of my shortcomings? और वो इतना डीप चला गया कि कभी मेरे को सिगरेट सामने हो भी तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह से जो भी all the likes for all the objects of the world or desires for the objects of the world, they must die their own death. You have to find a reason, a higher reason, not to just give them up, but to engage your mind to that higher. And that was my भगवान का नाम. तो आप भी कोशिश करो. तो यतति यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम माया. He is giving the principle that the senses forcibly, if a mind is empty, प्रत्याहार में है और आपने वैसे ही रखा है थोड़ी देर के लिए और उसको कोई आगे का कोई रास्ता दिखाया नहीं, डीपर, फाइनर, subtler, so the senses will hijack the mind and take you back into the world. And therefore, here it is saying that even a wise man, a man of wisdom, he continues to practice self-control. In this manner, tani sarvani sanyamya युक्त आसीत मत्परः वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Having controlled all the senses, a striver should engage in meditation, devoting himself heart and soul to me. भगवान कह रहे हैं. अभी मेरी जो स्टोरी बताई वही हुआ था. मुझे पता नहीं क्या वर्ष आ रही है बाद में, पर exactly the same thing happened. I spoke to him and I said, okay, I'll commit to you. That's it. Otherwise, if I had gone back to what I was doing, again 1 more month of the same mistake. Practice for some time, quieten the mind, and then feel that full of yourself that I have controlled my mind and I am able to keep it empty, and then let go of the control, and then the world pulls me back into to itself. And this is what is happening to us every morning when we wake up. It pulls us back into the world. So here it says, devote and to me. His wisdom, mind is stable, constant,
whose senses are under control. सबसे पहले without sense control. सेंस कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि बंद करना है, मैं फिर से बता रहा हूं. सेंस कंट्रोल का मतलब ये है कि द फाइव सेंसेस आर इनडिफरेंट टू देयर स्टिमुलाइज. इनडिफरेंट. Or the other way to look at it is the example that I gave you. Each sense is only the illuminator of the stimuli. Look at it that way. कितना टाइम हो गया बताओ भैया? Still time. 5-10 minutes more. And continuing with that thought, here Bhagwan is giving. With this thought, we will conclude. This is practical also. You must have heard, some of you must have heard. If you others you have not heard, कि how we become detrimental to our own growth. हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, हमारे जीवन में इच्छाएं कैसे बनती हैं. हम पैदा इच्छा से तो नहीं हुए थे, फिर इच्छा कैसे बन जाती है, यहाँ पे बताया. रिपीट आफ्टर मी. यू विल ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः ते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. This is called technically the ladder of fall. This is called the ladder of fall. How we fall? Fall to where? Fall to the objects of the world. Fall to the desires. When too many desires in our mind, then we don't know ये खाऊं कि वो खाऊं. जैसे एक लड़का मेरे पास आया, मैं मेलबर्न में था, पता नहीं कहाँ से, स्वामी जी का ही भक्त था, हनुमान जी का, बिरला मंदिर में मिलता था. उसको कहाँ से पता चल गया स्वामी जी, कहीं उसने टाइम पास में देखा होगा कि ये भी एक स्वामी जी है. तो मेरे को फोन किया, स्वामी जी मेरे को आपसे बात करनी है. मैंने कहा ठीक है बात करो. नहीं नहीं नहीं, आप इंडिया आ रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं 2 दिन में पहुंच रहा हूँ इंडिया. आई वॉज गोइंग. तो और लकीली वो नोएडा में रहता था, मैं वसुंधरा में किसी के घर रह रहा था. कहते ओ आप तो बिल्कुल मेरे घर के पास में ही हो, मैं आपको मिलने आऊंगा, कल ही आऊंगा मैं मिल, जैसे ही आप आओगे मैं आपको उसी दिन रात को मिलूंगा, आ जाओ. और प्रश्न क्या पूछने आया, सोचो जरा. द डे आई लैंडेड ही केम टू मी, नेक्स्ट डे ही इज गेटिंग मैरिड. और मुझे पूछने आया है स्वामी जी मैं शादी करूं या नहीं करूं. भाई यार, मैंने कहा उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है सब कुछ करने के बाद. पहले सोचना था, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले पूछ लेता तो मैं कुछ और बताता. But tomorrow you are going to get married and you are asking, you feel that it is an intelligent question, that should I get married or not. ऐसे ऐसे हैं नमूने, हम भी उनमें से एक ही थे. तो ध्यायतो विषयान् पुंसा. So first step, what is that? Whenever we think about something more than once, sangastheshu upajayate. So pumsa means people. Whenever we think of something, what is that? He showed me this camera. Yesterday he showed me, I think. Yesterday only he showed me. एक बार दिखा दिया, 2 बार बोला, पहली बार बोला मेरे को ठीक होगा कैमरा है, दूसरी बार भी बोला, फिर तीसरी बार बोला स्वामी जी आपको घर पे आने में आपको इसका फंक्शनिंग में दे दूंगा. अब मेरे दिमाग में कैमरा 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 चल रहा है. क्या हो गया?
ध्यायतो विषयान पुंसान, पहले आपने उसके बारे में आपने एक बार भी सोचा, फिर दूसरा वो संगस्तेषु पर जाए, तो यू गेट अटैच्ड टू दैट. Attachment, how does it express? By thinking about that person, by thinking about that special necklace which you saw in the window shopping again and again. देखा, नहीं नहीं मेरे बजट के बाहर है, चले गए, फिर से देखने में क्या हर्ज है, देखते हैं. सी, फिर कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके वो खरीद ही लेते हैं जब इच्छा ज्यादा हो जाती है. तो सेकंड स्टेप इज, फर्स्ट इज यू थिंक अबाउट समथिंग, second is you get attached to it, then sangat sanjayate kamaha, when you get attached, then day in and day out sapne mein bhi you will keep thinking of that girl. I think she'll make a good wife. I think I must get married to her. I think I must get married to him. You will keep thinking again and again. Your desire, jayate kamaha, desire to possess that gets invoked within you. तो इसके लिए क्या करना है? सोचो ही मत. कैसे नहीं सोचे, ज्यादा इंटेंसली मत सोचो. इसीलिए बोला गया है समत्वम योग उच्यते, रिमेन इक्वेनिमस, remain balanced, don't get too excited, don't get too depressed, don't get too gung ho about anything in life. Maintain a poise. If that poise is not maintained, तो ध्याय तो विषयान पुंसा, अरे यार क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है ये कपड़ा, ड्रेस इतना बढ़िया मटेरियल है. क्या है? हाँ, वो अंगूठे में से निकल जाता है पूरी की पूरी शॉल. देखो कितना पतला है, कितने का है? 60,000 का. अरे तेरे क्या, 60,000 का कहां से लेके आएंगे? जाओ आप अभी, हम काठमांडू से ही आ रहे हैं, वहां पे ऐसी ऐसी शॉलें मिलती हैं. तो संगात संजायते कामः, फ्रॉम अटैचमेंट डिजायर इज बॉर्न. सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला. थिंक, गेट अटैच्ड, अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर. कामात क्रोधो भी जायते, डिजायर लीड्स टू, यहां पे लिखा है एंगर लीड्स टू, सॉरी, डिजायर लीड्स टू एंगर. व्हाट इज दैट एंगर? 60,000 का मेरे को खरीद, क्या है ये लाइफ? पूरी जिंदगी एक मैं नेकलेस नहीं खरीद सकती, एक शॉल नहीं खरीद सकती, पहली बार कुछ चीज अच्छी लगी है और वो भी नहीं खरीद सकती. अब ये तुम्हारे मन में चल रहा है, घर में जाके इसको थप्पड़ मार, उस बच्चे को थप्पड़ मार, चाय फेंक उसके सामने, पी लो. क्यों? अंदर की अंदर चुट 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 चुट, कहीं टाका बैठा लगता है, वो उंगली दिखाता है. सारी पोल मत खोलो यार. So you are the representative for everyone, is it? एक मिनट. हाँ, कामात क्रोधो भी जायते. When a desire is fulfilled, what happens? When a desire is fulfilled, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, उससे क्या होता है? Another desire. You want it again. You want it again. Or something like that, or something different. Desire keeps increasing. It can lead to greed. And greed can never be satisfied. And even that greed, when it is not satisfied, it leads to anger. If you get what you want, it will lead to greed. If your desires are satisfied, it will lead to greed. If your desire is not satisfied, it will lead to anger. And greed also can never be satisfied. It will eventually lead to resentment and anger. This is the formula. Again, thinking about an object, getting attached to the object, desiring the object,
And then that desire, if fulfilled, leads to greed. Greed cannot be satisfied, it leads to anger. And if desire in the first place is not satisfied, it leads to anger. This is the formula. This is the first verse, 62nd verse. Now उसके बाद क्या होता है? गुस्सा आने के बाद क्या होता है? क्रोध, वो आगे भी है, अभी तो काफी लंबा स्टेप है. क्रोधात भवति सम्मोहः. When you are angry, you don't know what is, you get deluded. Your mind gets deluded. It's colored. कभी गुस्से से इतना पागल हो जाता है कि समझ नहीं आता कुछ. तुम्हें पता है कि गुस्सा आएगा तो मैं अपना संतुलन खो दूंगा, फिर भी उस गुस्से, बट इज इट नॉट राइट, इज इट नॉट राइट फॉर मी टू फील दैट वे? तेरे के ले गया फिर. उसको कोई, तुम ही बचा सकते हो, कोई और नहीं बचा सकता. तो सम्मोह इज that you become deluded by that anger. Anger leads to delusion. Sammohat smriti vibhramaha. That deluded mind forgets. Last time मैंने अपना 50,000 का टीवी तोड़ दिया था गुस्से में. And you allow that anger to come, and again something else is destroyed. Sometimes टीवी वीवी तो फिर भी replaceable है. Sometimes marriages are destroyed. Sometimes children in that, parents in that anger hit the child so hard. बचपन में we are all in that age group जहाँ पे हमको थप्पड़ पड़े हैं. आजकल तो मारने नहीं देते, इसलिए बच्चे बिगड़े हुए हैं. तो it used to be damaging to them. गुस्से में तो स्मृति विभ्रमः. स्मृति, memory. That last time I got angry, I committed such a disastrous act. I forget. जब उसका जो वेग आता है ना गुस्से का, उसमें हम भूल जाते हैं कि हमने पिछली बार कैसे बिहेव किया था, कि हमको पुलिस पकड़ के जेल में ले गई थी, हमारे को रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिल गया था. कईयों का होता है, कितने केसेस आते हैं मेलबर्न में. पर फिर भी अभी गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है. इसके लिए एक चीज है, एक्सपेक्टेशन करना लाइफ में बंद कर दो. किससे? सबसे पहले अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से. वो पैदा हुए हैं, लेट द लॉर्ड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग विल बी फाइन. वी बिकम अ प्रॉब्लम टू आवरसेल्व्स व्हेन टू प्लेसेस. ईदर वी हैव टू मेनी रिग्रेट्स इन लाइफ, एंड सेकेंड थिंग इज वी हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ. रिग्रेट्स का तो तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हो चुका है. उसके लिए जप करो, भगवान के ऊपर छोड़ो. प्रणवम दीर्घम उच्चार्यम मनोराज्यम भी लिए थे. लंबी सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करो, सारे पुरानी प्रॉब्लम सब क्लियर हो जाएंगी. पर जो फ्यूचर में आने वाली है उनके लिए क्या करें? एक्सपेक्टेशन बंद करो. Expectations lead to anxiety. Expectation leads to depression. Expectation leads to, from ourselves or from others, leads to suicide. Worst case scenario. तो यहाँ पे बोलते हैं कि सम्मोहात स्मृति विभ्रमः. या हम भूल जाते हैं कि पहले हम कैसे बिहेव किए थे. हमने अपने आप को इंजर कर लिया था, हमने किसी और को इंजर कर लिया था. तो एंड उसके बाद क्या बोलते हैं? स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशः. When we forget, the memory doesn't click in, then buddhi is also not able to. Why you are able to every morning remember that, hey, yesterday this was my wife, it's still my wife. Today also she is the same one. But in dream you don't think like that. Every day new wife. सोचो, new kids, new wife, new house, new body every day. Living like a pauper. वहां पे इतनी वैरायटी है, यहाँ पे एक ही. वही बच्चे, वही घर, वही सब कुछ, वही प्रॉब्लम्स. तो बुद्धि क्या करती है? व्हाट इज द जॉब ऑफ इंटेलेक्ट?
The job of intellect is to discriminate between right and wrong. What is correct and what is incorrect. What is dharma adharma. Right and wrong. जब हमारी memory click नहीं होती, then we can't remember what is right and wrong. And this is the effect of becoming or allowing the anger to take over. Buddhi nashat pranashyati. And where the intellect is not able to determine what is right and wrong, that is fall of man. He is no longer a man. Sometimes he is worse than an animal in the human body. Where did it all begin from? Thinking about some object. Dhyayato vishayan. So again we'll go through. Thinking about an object leads to attachment to object. Attachment leads to desire for the object. If desire is satisfied, it leads to greed. Greed cannot be satisfied, so it will lead to anger. If desire in the first place is not satisfied, it will again lead to anger. Anger leads to delusion, deluded mind. It gets delusion, in other words, it gets clouded. And in that clouded mind, you forget how you behaved last time, because you are in that moment that anger has taken over you. And where you have forgotten the past, how you behaved, then you do not know what is right and wrong. And where a man does not know what is right and wrong, that is the fall of man. ये याद कर लो. And you can catch if you are getting angry with anything, with anyone, you can pinpoint which step of this equation you are stuck. What is the root cause? कहां से शुरू हुआ ये गुस्सा? किस चीज में मैं अटैच्ड हूं? अटैचमेंट किसकी वजह से आया? किसके बारे में मैं सोच रही थी या सोच रहा था? And correct and come back to balance. Important thing is to come back to balance. And here a technique, and the wise men, they remember this and they don't succumb to thinking about the objective world, because they know it will lead in this direction. Therefore, they are steady in wisdom. Therefore, they are in poise. We'll leave it here. There are many things more, but आपका भी कल ऑफिस वर्क है, मुझे भी एयरपोर्ट जाना है, तो we'll conclude with this. Is that okay? Or I can go till 10 o'clock I have to go to airport. I can keep talking till 10 o'clock. स्वामी जी लास्ट का 5 मिनट रिपीट करें. क्या चीज? लास्ट का जो 5 मिनट YouTube पे सुन लो यार. लास्ट क्या, ये जो ध्यान तो पिशान पुंसान, फिर से बोल देता हूँ एक बार. हाँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ. Look at, you think of an object for too long. Maybe first time I look at something, it's okay. But if second time I revisit it, I will have a attachment to that. Attachment means my mind will automatically again think about it. If it is thinking without any reason, understand you got attached to that. It will lead to desire. सुन लो, मैं आपके लिए बोल रहा हूं. तो attachment to an object leads to desire. Desire अगर satisfy हो गई तो लोभ, greed किसी का satisfy नहीं हो सकता. तो गुस्सा आता है जब satisfy नहीं होता. और अगर पहली बार और अगर शुरू में ही satisfy नहीं हुआ तो गुस्सा आ गया सीधे. जिसको गुस्सा आ जाता है उसका मन भ्रमित हो जाता है. सम्मोह, भ्रमित मन में स्मृति आपकी भ्रष्ट हो जाती है. आपको याद नहीं रहता कि पहले आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था उस गुस्से के वेग में. और जहां आपको याद नहीं रहता क्या किया था, क्या नहीं किया था, जब इस टाइप का मन होता है तो बुद्धि को समझ नहीं आता कि सच करेक्ट क्या है और गलत क्या है.
और जिसको ये पता नहीं कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, जिस बुद्धि को, मैं आदमी की बात नहीं कर रहा, बुद्धि को, जिस बुद्धि को ये नहीं पता कि किसी भी गिवन सिचुएशन में करेक्ट क्या है और गलत क्या है, इट इज गॉन वर्स देन एन एनिमल, इट इज द डेथ ऑफ मैन। आदमी किसको बोला जाता है? आदमी वो है जिसका मन उसके कंट्रोल में है। देवता अपना मन अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, असुर अपना मन अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, टेम्पररी कर लेते हैं। पर मनुष्य के पास ये चॉइस है कि वो पूरा मन कंट्रोल करके असुरों और देवताओं के भी आगे निकल जाए और ईश्वर से एक हो जाए। ये सिर्फ ना ना प्लांट किंगडम में उनको ऑप्शन नहीं है, एनिमल किंगडम में ऑप्शन नहीं है, गॉड किंगडम में ये ऑप्शन नहीं है, असुर किंगडम में ऑप्शन नहीं है, ओनली ह्यूमन किंगडम दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। सो डोंट वेस्ट द ह्यूमन बर्थ, डोंट वेस्ट द ह्यूमन बर्थ। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, जो तुम्हारी डेस्टिनी में है, परसों बताया था मैंने, जो आपकी डेस्टिनी में वो होके ही रहेगा। आप जितना मर्जी पापड़ बेल लो, जो होना है वो होके रहेगा। आप बहुत जबरदस्ती इतना एकाग्रचित करके अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, बदल लोगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। बट इंस्टेड फ्लो विद नेचर, रिमेंबर द डिवाइन, हैव फेथ। जब वो बोल रहे हैं इतनी बार योग क्षेमम वहां में हम, मैं तुम्हारा सब देख लूंगा, योग मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, और क्षेम जो तुम्हारे पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। अभी इससे बड़ा इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा तुम्हें? इंश्योरेंस कंपनी भी, मैंने अभी मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस था, तो मैंने बहुत सालों से मैं पे कर रहा हूँ। कभी मेरे को किसी ने बताया स्वामी जी इसमें आपका सुपर भी है, तो आप कायरोप्रैक्टर कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, ऑस्टियो जा सकते हो। मैंने सारा यूज करके, मेरा 2000 का बिल आता है, 1800 का मैंने खर्च कर लिया। उन्होंने अगले साल मेरा कम कर दिया पूरा का पूरा सुपर सुपर में। उन्होंने पहले मेरे को 1800 मिलते थे, अब उन्होंने मेरे को सिर्फ 1200 दिए। एंड व्हाट इज देयर रीजन? और द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज गॉन हाई। इससे अब मैं उसके बारे में रो, या फिर मैं भगवान को याद करूं? वो सबसे बड़ी इंश्योरेंस है। वो कह रहा है, ही इज गिविंग एश्योरेंस कि आई विल टेक केयर मैन, यू थिंक अबाउट मी, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सो समवेयर फाइंड दैट स्पेस, फाइंड दैट टाइम, फाइंड दैट इंक्लिनेशन, दैट लव। थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो करो प्रभु के प्रति, नॉट मैकेनिकली। रोज दिया लगाते हो, रोज अगरबत्ती लगा देते हो, वो सब ठीक है, लेकिन फाइंड सम टाइम फॉर वन, 1 मिनट, हाफ अ मिनट, कि यू आर टोटली इन कम्युनियन विद हिम, टॉकिंग टू हिम, शेयरिंग योर लाइफ विद हिम, आस्किंग हिम टू गिव, टू ब्लेस यू, that how please show me that you and me are one। एक 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 आत्मीयता के साथ उसके साथ बात करो, देखो कैसे परिवर्तन शुरू हो जाता है जीवन में, अच्छे के लिए। कुछ छूटेगा नहीं, चिंता मत करो। वो कह रहा है कि मैं क्षेमम जो है वो तो मैं छीनूंगा नहीं, तुम्हारे पास ही रहेगा। मान लो। विद दिस थॉट लेट्स कंक्लूड एंड ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Just sit quietly for a moment.